ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡ଼ା ହବ। ଏକ୍ଜିମ୍ର ଫିନିଶ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା, ସରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା। ହଁ ଏକ୍ଜିମ୍ସର ସରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ କାଲିକି ପଳେଇବା ଏ ସବୁଆଡ଼େ ରହିଲେ ହବ କି? ଏଇଠି ପରା ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଏଇଟା ଇଏ ବାଲା ଅଛି। এটা ନୂଆଟା ବାହାରିଛି ବୋଧେ ଜୁଗରା ନା। ଭିତରେ କଣ ଗାଡ଼ି
तरफ अभी तो कोई भी नहीं है हमारे पास। अभी आप तो एक दिन में कोई कैसे बनाएंगे? अरे आम दुकानটা কোটি পড়ছি দোকান কথা কই পারিনি সারা যাই দিব এই জায়গা হ্যাঁ বের আইনা বলে क्या ऑल इंडिया में प्राउड इलाकी आइलैंड हाँ हाँ ऐसा ऐसा फोटो का अरे बोलो कौन को दिया व्हाट्सएप कर दो Thank you for coming for staying together. We are going to support you as much as possible. 100%. This year will come up to all the people. Blessing to us. We are proud for our country and we are proud for them. And we are thankful for you, sir, and for helping us every time. This continue. Ensured. Really? So you know it? This vehicle can, after exhibition can transport by. Whatever you transfer immediately, I will give it back. So sir, Vipul, actually आपका जो problem था ना future, so we have started one more new product line which is data mill. तो ये उन सब के लिए है जिनके पास अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक होते हैं और जो बाहर से फ्यूल लेकर आते हैं ना, फिर पता नहीं चलता कि एक्चुअली बाहर के टैंकर में फ्यूल कितना आ रहा है। तो एक्चुअली ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म जो फ्लो मीटर के थ्रू पे जाता है, तो लेट अस से इसमें ड्यूअल फिल्ट्रेशन यस क्वालिटी नहीं है, इसमें क्वांटिटी का होता है। वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड टू यस यस 45930 we have already and they are detecting surface and also quality के लिए हम लोग डेंसिटी के टूल्स में लगा सकते हैं। अभी तक हम थोड़ी कस्टमर क्वालिटी मांगते हैं तो हम लोगों ने डेंसिटी लगाया मेड इन जर्मन यस now yes it's going up we can use only in Odisha I am using the electronic stuff yes all their systems are electronic only तो इसमें हमने क्या किया तो जो बाहर से टैंकर्स आते हैं तो वन साइड इज कनेक्टेड टू टैंकर एंड अदर साइड इज कनेक्टेड टू योर अंडरग्राउंड टैंक तो जो भी मीटरिंग यूनिट से फ्यूल निकलता है ना दैट इज द एक्चुअल अकाउंटेड फ्यूल तो लेट्स से दिस डेटा मिल नहीं नहीं सर के पास मेनली 12 एलकेएल के सारे मोबाइल रिफ्यूलर्स हैं 17 से निकलने लग जाएगा मैन्युफैक्चरिंग डबल कर दिया इस रेट बाय 8 ये आगे और होता है अभी सो मेनी because we have the our low price is ये one objective This is the fuel dispenser.
पर डे मिनिमम इवनिंग आवर जो लाइट आप 5 to 6 pm स्टार्ट मॉर्निंग 5 to 6 pm मिनिमम 12 hours पर डे रनिंग ऑफिस सार लोकेशन कर फाइनेंस सब जिन आप देखिए नेक्स्ट पोर्टेबल पावर बोरवेल गैस स्टोन क्वारी आयरन ओर क्वारी कोल माइंस कंप्रेसर लगी कंप्रेसर ड्रिलिंग स्टेबिलिटी जैकम लगी जैकम स्टोन क्वारी पे जो प्रेशर ये ड्रिलिंग करिवे ड्रिलिंग कंप्रेसर आ स्पेसिफिकेशन एटा आगे लिखा है अपन PA 550 एटा बेसिकली फॉर 14 kg प्रेशर 14 kg सोलर लैंड सोलर लैंड एटा अब अपन मॉडल देखो एटा इंजन मॉडल हमर होची कंप्रेसर मॉडल होची PA 550 एटा अपन 350 kg पाखा में आउ जे हम वर्किंग मार्केट रे जा रिकॉर्ड एटा ड्रिलिंग पे यूज करते मैं आपनकर बोरवेल पे यूज करते ये कंप्रेसर नहीं बोरवेल आपनकर गवर्नमेंट में प्राइवेट रो बोरवेल करके आया वो हमको नहीं दिया ଆମର ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲର ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବୁଝିଲେ ସାର୍ ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଲଗା मैंने भी बोला अपनी सब्जी को बोला मैंने कहा अभी बता रहे हैं तो पानी यार मेरे को है ना कुछ स्पीच देना है 2 मिनट का तो यू गिव मी समथिंग इन रिटन और मैंने बोला ये मैं क्या नाम है गूगल स्पीच चालू कर रहा हूँ ये सब लाइन्स मत बोलना तो लास्ट में जब चैट जीपीटी बोला तो सिर्फ एक ही लाइन आप बोल सकते हो 100 million tons of minerals are to be exported
and that's the only point is left. Thank you so much. I will not take much time, but yes, Odisha में बहुत बड़ी opportunity है हमारे पास. 100 million tons कोई छोटा फिगर नहीं है पर मंथ एक्सपोर्ट करने के लिए और यूज करने के लिए. सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, तो मैं सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा. थैंक यू सो मच. We are really grateful for the support from all of our partners, and one of our esteemed partners is present on the dais. With immense respect, I would be requesting Head of Mines, ArcelorMittal Nippon Steel, none other than Shri Amit Dubey for his speech. Thank you for your support and looking forward to listen to your motivating golden words. Ladies and gentlemen, please give him a round of applause. Good afternoon, everybody. A very big thank you from ArcelorMittal Nippon Steel for being here, making the event very successful. I would like to just say a few words about the main course who has conducted this event, that is PhD Commerce of Chamber and Industries. So this body has been working for more than 100 years, and it has really promoted the trade and the participation of the industry, the bodies who